Hello and assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well. तो आज की वीडियो में we are going to be going through and reviewing 4 different personal statements from the 4 different schools here at the Lahore University of Management Sciences. अब ये जो personal statements हैं, these are from SDSB, SSE, HSS and SAHSOL, and these are all sent in by many of my friends and some of the people that I know at these particular schools. लेकिन आज की वीडियो में although I have done a full review on my own personal statement, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि उसके अलावा भी there is a variety of variation that is allowed within the personal statements that you can send into LUMS. और मेरी जो personal statement है उसी तरह की personal statement आपको नहीं लिखने की ज़रूरत even if you are applying to the same school, and that is exactly what we are going to be going through. I'm going to be telling you what to take from these, what not to take from these, and without further ado let's get into it. अच्छा जी, तो अब पहले स्कूल को जो हम देखने लगे हैं that is going to be SDSB, and this personal statement has been sent in by a very good friend of mine, Mohammed Shayan, who was a friend of mine from LGSJT and is now also in uni. Mohammed Shayan is a student of SDSB, and now coming over to his personal statement, this in front of you is his first prompt. अब जैसे कि आप देख सकते हैं इसको पढ़ते हुए, एक चीज़ जो एकदम स्ट्राइक करेगी आपको वो ये है कि चौहान ने अपने इंटरेस्ट को बहुत अच्छी तरह से सब्सटैंशियल कॉन्टेक्स्ट दिए। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी इस बारे में कि चौहान ने ना यहाँ एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस बनाई है ऑफ द करंट इंटरेस्ट दैट ही हैज़। उसने मेंशन किया है कि जैसे वो बड़ा हो रहा था उसने प्रोग्रेसिवली फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के बारे में मुख्तलिफ जगहों से कंटेंट इनटेक किया, और फिर इस सब को लेके उसने एक पर्पस डिफाइन किया जो कि ये था कि मॉडर्न फाइनेंस को इस्तेमाल करके ही वुड लाइक टू इनकलकेट इन पाकिस्तान दीज फाइनेंशियल स्कीम्स, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन हो और इस डिग्री को उस पाथवे पे वो लेके जाए, यानी जो डिग्री के लिए जिस डिग्री के लिए वो अप्लाई कर रहा है। अब इसके अंदर मेरे अंदाजे से इस प्रॉम्प्ट में चौहान ने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी है और अपना पर्पस और एम्बिशन स्लाइटली डिफाइन की है ताकि ऐसे को एक स्ट्रक्चर मिले, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइमरी फोकस उसने अपना इंटरेस्ट ही रखा है, विच इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग, एंड दिस प्रॉम्प्ट इज़ समथिंग दैट आई वुड नॉट एग्जैक्टली क्रिटिक। गुड स्टफ। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं SDSB के प्रॉम्प्ट 2 की तरफ। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं, जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे एक चीज़ जो आप बहुत इमीडिएटली रिकग्नाइज करेंगे वो ये है कि चौहान ने काफ़ी केयरफुली अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है, इन द सेंस कि उन्होंने लम्स की तारीफ भी की है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो चीज़ें उन्होंने सीखी हैं अपने एकेडमिक करियर के अंदर वो उनकी मदद कैसे करेंगी या मददगार साबित कैसे होंगी विद इन द यूनिवर्सिटी। एक चीज़ मैं अपनी तरफ से यहाँ मेंशन करना चाहूँगा जो कि मेरे अंदाजे से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जैसे कि आप देख सकते हैं कहा है कि उनके फ़र्क को करिकुलर्स और सब्जेक्ट्स क्या थे, और मेंशन करके जस्टिफाई करने की कोशिश की है ऑन हाउ दे वुड बी हेल्पफुल इन हिज फ्यूचर एकेडमिक करियर विद इन लम्स, राइट। मेरी रिकमेंडेशन इस हवाले से ये है कि सिंस आपने पहले ही अपनी को करिकुलर लिस्ट के अंदर एक्सटेंसिवली एलैबोरेट कर दी होगी या कर देनी चाहिए इफ़ यू हैव नॉट एज ऑफ येट, यहाँ पर आप कोशिश करें कि थोड़े पर्सनलाइज तरीके से इसको मेंशन करें इन ए फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी, एक पर्सनलाइज स्टोरी, राइट। तो फर्ज करें कि इंस्टेड ऑफ मेंशनिंग योर accomplishments के I was the head of X project of Y organization, instead of saying कि मैंने ये विजिट किया, यहाँ मैंने दरख्त लगाए, इतने मैंने दरख्त लगाए, instead of mentioning the numbers, instead of mentioning those big names, go ahead and talk about a story here. तो फर्ज करें कि you could say that you visited an old age home, और वहाँ पर जाके आप लोग you met the people and you saw how they were living in such dire circumstances, and in turn this reignited your fire to go and do something worthwhile so that you may contribute to the community and improve the circumstances of the people who are living in such situations. और ये आपका फिर एक why बन जाएगा, और उसके अलावा इस why को, इस reason को use करके you can then elaborate on what you want to achieve, यानी you can use this as your reason to why you want to achieve it, and then आप उनको बता सकते हैं
कि आप अचीव क्या करना चाहते हैं, राइट? अगेन, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, make sure to personalize your essays. But other than that, this is a super good essay which allows us to see what the student is and what they represent and what they wish to achieve. अब इसके अलावा अगर हम word count की बात करें about of both the essays, the word count of prompt 1 was 576 and the word count of prompt 2 is 538. अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं एक पर्सनल स्टेटमेंट पे फ्रॉम SSE which is written by रोहा and sent in by of course रोहा. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग अभी prompt 1 पे एंड ये पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ते या पढ़ना शुरू करते ही वन थिंग दैट यू कैन इमीडिएटली रिकग्नाइज इज रोहा ने काफ़ी हद तक एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल टच दी है. उन्होंने एक स्टोरी नैरेट की है जहाँ वो शेयर करती हैं कि 6 साल से 15 साल की उम्र तक उनका कंप्यूटर साइंस के साथ लेना देना, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, राइट? अब ये चीज़ एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस दे देती है, जैसे वी टॉक्ड अबाउट इन दी प्रॉम्प्ट 1 ऑफ दी SDSB एंड एज वेल एज माई ओन प्रॉम्प्ट 1. एक हिस्टोरिकल रेलेवेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज ये एडमिशन ऑफिसर को अलाउ करता है टू ट्रेस बैक वेयर योर इंटरेस्ट एक्चुअली बिगैन. सो दिस कैन बी सबकॉन्शियस और इट कैन बी वेरी वेरी अपेरेंट, राइट? तो इस केस में दिस वाज ऑफ कोर्स अपेरेंट, लेकिन मैनी केसेस में इट इज सबकॉन्शियस. और दैट मीन्स कि फर्ज करें कि आपका सबकॉन्शियसली यू आर ऑलवेज व्यूइंग योर फादर हु इज ए बिजनेसमैन एंड दिमाग में आपका वही बिजनेस एक्यूमेंट डेवलप हो ही जा रहा है बाय लुकिंग एट हिज डिसीजंस ओवर टाइम. दैट इज समथिंग सबकॉन्शियस एंड यू कैन टॉक अबाउट दैट. बट इस केस में रोहा टॉक्स अबाउट हर इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस एंड देन गोज ऑन टू एलैबोरेट हर इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स. अब उनका ये इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस वाज वैलिडेटेड ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जहाँ पर उन्होंने देखा कि कंप्यूटर साइंस इज नाउ बीइंग अप्लाइड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स, continuously. ऑनलाइन लर्निंग सारी इज बेस्ड अपॉन कंप्यूटर साइंस. और इस तरह से उन्होंने अपने ओरिजिन, इंटरेस्ट के ओरिजिन का बताया और फिर उसकी करंट सिचुएशन का बताया, विच इज समथिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस वीडियो एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद इन दिस प्रॉम्प्ट. गुड स्टफ. अच्छा, नाउ लेट्स कम ओवर टू दी प्रॉम्प्ट 2 फॉर SSE. अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक यहाँ रिपीटिंग आइडिया नजर आ रहा है कि द co-curriculars have again been mentioned in detail. You can see a list of co-curriculars from an internship at SOH Foundation to international events and then I believe ये NGO थी Cyber Allies. Do not get me wrong here, these are mashallah very very amazing co-curriculars, but LUMS already knows most of this, right? You have already mentioned most of the information of your co-curriculars within your co-curricular activity list. I feel like many people do make this mistake of going into listing their co-curriculars and accolades, and I'd recommend against it if you want to write a good personalized essay. Talk more of what was derived from these activities, such as the skills where you were able to learn HTML or CSS, मतलब एक कंप्यूटर साइंस की इंटर्नशिप करके, या फिर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज इन CS, या फिर मोर ऑफ द रिजल्ट्स, लेस ऑफ लिस्टिंग डाउन द एक्टिविटीज सिंस यू ऑलरेडी डन दैट बिफोर हैंड, राइट? नाउ अगर हम वर्ड काउंट पे बात करें ऑफ बोथ द प्रॉम्प्ट्स, फॉर प्रॉम्प्ट 1 फॉर SSE 343 एंड फॉर प्रॉम्प्ट 2 फॉर SSE 359. ऑलराइट, अब हम लोग आ जाते हैं इस प्रॉम्प्ट पे या फिर इस essay पे from HSS. Now I only have prompt 1 for the Humanities school because I was only able to find the prompt 1, but this is written by a friend of mine from the Humanities school and to me this is honestly one of the nicest attempts at the first prompt. अब इसके अंदर उन्होंने अपने इंटरेस्ट के बारे में बताया इन इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर वो बात करते हैं बाय स्टार्टिंग ऑफ विद ए पर्सनल स्टोरी विच इज़ ऑलवेज अ गुड टच, राइट, वेदर यू आर गिविंग अ स्पीच और राइटिंग एन एसे. अब इसके बाद वो बताते हैं कि उन्होंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के बजाय अपने पेरेंट्स की बात सुनी कि ओ लेवल्स में उन्होंने हार्ड साइंस वो हार्ड साइंसेस ले बैठे और सिंस प्राइमरी इंटरेस्ट उनका इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स था, जैसे कि उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने काफ़ी एवेन्यूज़ ढूंढने शुरू किए आउटसाइड ऑफ द नॉर्मल एकेडमिक करियर यू कुड से टू लर्न अबाउट ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स. और ये चीज़ उन्होंने यूट्यूब पे देखी, ऑनलाइन ब्लॉग्स और आर्टिकल्स के ज़रिए उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली एंड अल्टीमेटली ही ऑल्सो टुक इट अप इन ए लेवल्स. फिर कंक्लूजन ये दी विच इज़ अगेन समथिंग वेरी पर्सनल, और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी टीचर की बात की विच
who was a LUMS graduate, और बताया कि because of his compliments for this amazing university, which is again very good thing, because he mentioned कि उनके एक teacher was relevant to LUMS, and he gave compliments about LUMS, which again, flattery is a very good thing, but do not over flatter. Because of his compliments for LUMS, he decided that the LUMS was his one and only. Now this is a very nice essay in my opinion, because it has the information which is not present in any other part of the application, at least for the larger part of it. तो ये बहुत ही एक personal essay है, जो कि आप instead of telling of the achievements or the grades or all of the things which LUMS already knows, उन्होंने उससे हट के एक चीज़ पे बात की, which is always an amazing thing. Please try and write essays of this sort. Prompt 1, सिर्फ prompt 1 है इसका word count is 424. अच्छा, तो अब हम लोग आ जाते हैं लॉ स्कूल के बारे में बात करने पे. तो ये पर्सनल स्टेटमेंट मेरे एक दोस्त अली अब्बास ने लिखी है, जो कि सासोल में होते हैं, यानी लॉ स्कूल में होते हैं. कमिंग ओवर टू दिस, जैसे कि आप देख सकते हैं, और आप जब ये पढ़ना शुरू करते हैं तो you can see that it is very long. Minimum words जो थे, they were 200, and this is exactly 704 words. I would personally recommend, personally speaking, against writing such long essays. Keep them concise, to the point and direct. अब एक prompt के लिए 700 words is in my opinion overkill. खैर, prompt के बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने historical relevance दी है, लेकिन उसे immediate relevance के साथ merge कर दिया. As you can see, उन्होंने शेयर किया है कि उनके भाई एक लॉ मेजर के लिए जा रहे थे, और अली ने खुद जब लॉ नहीं पढ़ी, he was able to discuss it with his brother and thus develop his interest within it. और इस बात के ज़रिए उन्होंने justify किया अपना interest towards law despite not having it as a subject beforehand. उसके बाद अली elaborate करते हैं on a variety of benefits he may receive from being at LUMS, such as internship opportunities, distinguished professors, so on and so forth. लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही elaborate कर दिया, because as you can see, this paragraph alone is 213 words. अब उसके बाद he goes on to talk about sci-fi and his experience at LUMS for an event. LUMS को visit करना is always a good thing. LUMS को बताना क्या you have visited LUMS is again even a better thing. So उन्होंने ये भी बताया कि he visited LUMS and then goes on to elaborate कि he hopes to join a particular society at LUMS, which is again the knowledge, providing them the information of the fact that you have knowledge of things which are occurring within LUMS, such as उन्होंने sci-fi की बात की, उन्होंने society की बात की. These are always small touches which are very beneficial. Do go ahead and take this away from this essay. This is a very good point. लेकिन remember to keep it minimal and to the point. I'd recommend कि 500 words से किसी भी situation में ज़्यादा ना लिखें, 500 से ज़्यादा प्लीज़ ना लिखें. Alright, अब हम लोग आ जाते हैं SAHSOL पे. Prompt 2, again very lengthy. Do not go over 500 words unless very necessary, after cutting down the bulk sentences and of course perfecting the grammar. Now which initially this is all well and good, considering उन्होंने अपने co-curriculars के through बताया कि उन्होंने क्या सीखा था and how it would help with law. However, once you move to the third paragraph, which is right here, you'll see that the co-curriculars are being listed instead of elaborated upon or made into a story. Not a good idea. I'd recommend against doing that. Going through the rest of the prompt, it's perfectly elaborated as he's told, the effects of the co-curriculars and not listed them just for the sake of it. So again, keep it to the point, keep it concise, and ensure one fact कि आप list down करने के बजाय या तो story लिख रहे हैं या elaborate करें कि आपने उससे सीखा क्या था. अच्छा, तो मैं अब आपको कुछ conclusive tips दे देता हूँ for writing your essay, because I've gone through a ton of essays. I've written a ton of essays for both my US app and for LUMS. So number 1, download Grammarly. This will help you cut down your sentences if they are too long or they are too wordy. This will also help you perfect your grammar, which will make it easy for the admission officers to read your essay, which is always a good thing. Number 2, make sure that you are not listing down your co-curriculars or listing down your achievements
just for the sake of it or just for flaunting. You have already done so within your application. Just ensure that you are either making it into a story or listing it down to tell them what you learned from it. और ये भी नहीं उनको directly बता देना कि it made me more empathetic. आपने उनको एक story बतानी है कि मैंने ये देखा, उसके बाद मेरी ये उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले बात की थी, मैंने ओल्ड एज होम में ये देखा और फिर दिस enabled me or this lit a fire up in me to go and work for the community. This will not directly tell them कि आपको empathetic बना दिया, लेकिन this will give them an idea of why that happened, right? Don't tell them that it made you empathetic. Number 3, make sure that your essays are short and concise. Not short essentially कि 200 word से भी कम ले जाएं, लेकिन to the point हो, right? Give them the story to the point. Do not go on elaborating in flowery language. 500 वर्ड से ज़्यादा किसी भी हद में ना लिखें प्लीज़. नंबर 4, try and make this about you, personalized about you, what you learned, what your journey is, who you are, right? Whatever your name is, जो भी आप देख रहे हैं, मैं अपनी बात करूँ, whoever Shayan Faisal is, that is who they want to know. They already know about your co-curriculars and all of what you've achieved. Mashallah, I'm sure it's a great amount, but make sure that this is about you. Number 5, and arguably the most important tip of all, is the fact that जो ये essays मैंने आपको दिखाए हैं या मेरा अपना essay, that is not the only possible way to write an essay, right? You can make up a story, you can not make up a story, but write a story in any way, shape or form that you want, but it has to be you. And उसके अलावा an idea that you need to understand is, हो सकता है कि जो मेरा ऐसे हो इट इज़ नॉट दी बेस्ट ऐसे, या फिर जो ये ऐसेज मैंने आपको दिखाए हैं दे आर नॉट दी बेस्ट ऐसेज, लेकिन जो क्रेडेंशियल्स थे उन स्टूडेंट्स के या फिर मेरे, दे मेड अप फॉर द फैक्ट दैट वी डिड नॉट राइट अ गुड ऐसे. इन ए सिमिलर वे आपका जो ऐसे है इट कैन ऑल्सो मेक अप फॉर द फैक्ट दैट यू डू नॉट हैव एग्जाम्पलरी को करिकुलर्स और एग्जाम्पलरी ग्रेड्स, not in the same way as your credentials, as your other grades and SAT score, but it is surely better than just nothing. So make sure that if you are lacking somewhere else, you try your best to fulfill that gap using this essay. And of course with that this video comes to an end. I hope you enjoyed. I hope that you found this video useful, and until next time, take care, stay fit. Allah Hafiz.